Hello all, welcome to Ansarkari. So let's continue dealing with the questions. So this question says in four consecutive prime numbers. So consecutive means one after the other and then they say prime number. So we'll deal with the meaning of the keywords later. First let's read the question. That are in ascending order. Again they talk about ascending order. The product of the first three is 385 and that of the last three is 1001. The largest given prime number is, this is what they are asking. So basically they are saying that in four consecutive prime numbers. So consecutive means one after the other. अगर हम बोले कि we need three consecutive natural numbers. So the example for that can be 1, 2 and 3. तो ये consecutive है. वहीं अगर हम ऐसे लिखें 6, 7 and 9. तो these are not consecutive natural numbers because यहाँ पे 8 is missing. If we write suppose 9, 10 and 17 तो again even these are not consecutive. तो अगर किन्हीं भी दो के बीच का जो डिफरेंस है दैट लाइक अ नंबर एग्जिस्ट बिटवीन देम तो वो कंसेक्यूटिव नहीं होते. Then we talk about prime numbers. So prime numbers are basically those numbers which do not occur in any numbers table except for their own and the table of 1, that are in ascending order. And ascending order obviously like from the lower value we just keep on going to the greatest value. For example ये ascending order में लिखा है, even this is written in the ascending order. The value of the rightmost will be the greatest and of the leftmost number will be the least and accordingly in the between. Then they say the product of the first three is so there are four consecutive prime numbers जो हमें नहीं पता. Then वो कहते हैं कि जो product of first three will be equal to 385 and that of the last three is 1001. Then they ask what is the largest given prime number. तो see अगर हम थोड़ा approximation लेके चलते हैं, so first let us हम लेट कर लेते हैं कि क्या क्या प्राइम नंबर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट दैट ए बी सी एंड डी, these are the four consecutive prime numbers. So even if we give the example of consecutive prime numbers, if I write here 2, 5 and 7, तो ये consecutive prime numbers नहीं है because यहाँ पे 3 भी एक prime number है. तो consecutive होता तो या तो हमें 2, 3 और 5 लेना चाहिए था अगर हम 3 consecutive prime numbers की बात करते हैं, or we should have taken 3, 5 and 7 for the case of consecutive prime numbers. अगर हम 3 consecutive prime numbers की बात करते हैं, but here the question says we need 4 consecutive prime numbers. तो this was just to explain here. And now we have let के जो numbers है ना prime numbers वो ये है like A, B, C and D. These are the four consecutive prime numbers that we have. And then they say the product of the first three, which means A multiplied by B multiplied by C is equal to 385, and that of the last three, which means B multiplied by C multiplied by D is equal to 1001. वो ये चीज कहता है कि the product of the first three numbers, this becomes equal to 385, and the product of the last three numbers, for example B, C and D, that becomes equal to 1001. They are asking what is the largest given prime number. तो largest इसमें ये है, ये हमें कैसे पता, because it is written in ascending order, तो हमने इस order में लिखा, which means we need to find the value of D. D is equal to what? So if we assume, see they are saying A, B and C, their product will be equal to 385. तो अगर हम assume करके चले कि ऐसे कोई तीन numbers, by hit and trial method we can write here 5, 7 and 11. अब ये consecutive है because जो 6 है वो prime number नहीं है. Then 7 we have 8, 9 and 10, and 8, 9 and 10 are also not prime numbers. तो यानी कि 5, 7 and 11 are three consecutive prime numbers, and ये भी ascending order में लिखे हैं, right? Like the values according to values if we check. तो इनका product if we check, for example, this will be equal to 35, 7 multiplied by 5, and then 35 into 11 will be equal to 385. So see, it is correct, right? A multiplied by B multiplied by C is equal to 385 है. A हमने 5 लिया, B हमने 7 लिया, and C हमने 11 लिया. So this will be equal to 385 here, which means ये तो numbers है. Then after 11, what will be another number? Another number will be equal to 13, क्योंकि 13 prime है and consecutive है, like इन्हीं order में, and ascending order में भी लिखेंगे तो ये perfect आ रहा है. Then they say B, C and D. तो अगर हम cross check करें B, C and D से, then we have here 7 multiplied by 11 multiplied by 13. So 13 sevens will become like 78.
So 13 sevens are becomes, so 13 sevens are 91, and then we need to multiply 91 by 11 क्योंकि हम B C और D के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, so again we have this particular number itself, which means that these are the four consecutive prime numbers written in ascending order, and they say the largest given prime number is, it is equal to 13. So we can check this. एक तो ये hidden trial method हमने करा, and दूसरा is doing this by options. For example यहाँ पे 11, 13, 7 दिया हुआ है, 17 और 19 दिया हुआ है. तो अगर हमें 11 से चेक करना होता है तो 11 की किस्म हम क्या लिखते हैं? We would have written 11, 7, 5 and 3. तो हम इस डायरेक्शन में चल देते हैं क्योंकि भाई असेंडिंग ऑर्डर तो यही हो गया, एंड कंजर्वेटिव तो हमें चाहिए ही चाहिए. एंड देन वी कुड हैव चेक्ड कि इनका प्रोडक्ट 385 आ रहे हैं नहीं, एंड इनका 1001 आ रहे हैं नहीं. एंड सेम गोज द केस फॉर 17 and 19. So the answer for this particular question will be equal to the second option, that is 13. Now this is a really good question and we must remember the conclusions of this question कि क्या क्या हमें समझ में आया, the basic concept, so that it can help us in other questions as well. So let us read the question. Now it says a number when divided successively by 4, 5 and 6 leaves remainders 2, 3 and 4 respectively. Then they say the least such number is, यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एलसीएम, दिस इज प्रीटी एविडेंट क्योंकि यहाँ पे लिखा है सक्सेसिवली बाय, यानी कि वो डिवाइड हो सकता है बाय द नंबर्स 4, 5 एंड 6. सो इट सेज कि अगर हम सपोज एक नंबर है एक्स, जो ये नंबर ही पूछ रहे कि जो लीस्ट नंबर है, सपोज ये नंबर एक्स है और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आना चाहिए. इफ़ यू डिवाइड द सेम नंबर जो कि एक्स है बाय 5, तब रिमाइंडर 3 आना चाहिए. एंड सेम इज़ द केस फॉर 6. 6 से डिवाइड करेंगे देन द रिमाइंडर शुड बी 4 एंड द नंबर शुड बी सेम इन ऑल द केसेस ऑब्वियसली. तो बेसिकली हमें ये 3 रिस्पेक्टिव नंबर्स चाहिए ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 4, 5 एंड 6. सो द केस हियर इज दैट द जो रिमाइंडर है ना हमारे पास डिफरेंट है. इफ द रिमाइंडर वाज सेम तो हम आराम से ऐड कर देते हैं. वील फर्स्ट फाइंड आउट द एलसीएम एंड देन वील चेक हाउ टू मूव ऑन फॉर दिस क्वेश्चन. So to find out the LCM, we can write the numbers in such a way, and the LCM comes out to be 60. Like we'll just take the highest parts of all the bases, and LCM here is 60, which means कि जो वो number होएगा, the 60 is the least number जो कि divisible है 4, 5 and 6 तीनों से. ये सबसे छोटा सा number है. जिस केस में जो remainder है वो 0 आता है. Only then obviously it will be completely divisible. बट वी डू नॉट नीड 60. हमें कंप्लीट डिविजिबल नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, 5 से डिवाइड करें इस नंबर को 60 को तो रिमाइंडर 3 आए. बट currently we have the remainder as 0. So the observation here is, if we subtract, if we find out the difference of the consecutive, like of the respective divisors and remainders, तो वो ना equal आ रहा है, which means that is constant. The difference is 2 in each case जब भी हम subtract कर रहे हैं. For example 4 minus 2 2 हो गया, 5 minus 3 2 हो गया, and same is the case for 6 minus 4. So we'll subtract 2 from 60. 2 is the constant difference. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिवाइजर्स एंड द रिमाइंडर्स जो हमें चाहिए. तो अब द नंबर दैट वी रिसीव इज इक्वल टू 58, यानी कि इफ़ वी डिवाइड 58 बाई 4 द रिमाइंडर दैट वील गेट विल बी इक्वल टू 2. और अगर हम 58 को ही 5 से डिवाइड करते हैं तब वील गेट 3 एज द रिमाइंडर, एंड इन केस ऑफ 6 वील गेट 4. तो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं. नाउ वील चेक कि देखो 60 से जब हम कर रहे हैं देन वी रिसीव द रिमाइंडर एज 0. अगर हम 4 का केस देखें, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 60 को, बट अगर हम नॉर्मली +2 ऐड कर देते हैं राइट, तो इन दिस केस ऑल्सो द रिमाइंडर वुड हैव बीन 2. बट नंबर जो है वो सेम होना चाहिए. तो अगर हम 62 को ही 5 से डिवाइड करेंगे क्या तभी केस बनेगा? So we'll check this now by dividing 62 by 5, and in this case the remainder will not be 3. The remainder here will be 2 again. तो लेकिन हमें 2 रिमाइंडर नहीं चाहिए राइट. वी नीड द रिमाइंडर एज 3 इन केस ऑफ 5. दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2. दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द रिस्पेक्टिव डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर्स. और अगर ऐसा केस होता कि हर केस में जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर से द रिमाइंडर इज सेम, दैट इज़ द रिमाइंडर इज 3, 4 या जो भी इन्होंने दिया होता, इन दैट केस यू वुड हैव सिंपली एडेड द रिमाइंडर टू द लीस्ट कॉमन मल्टीपल.